Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a bus travels the first one-third distance at a speed of 10 km per hour, then the next one-third distance at a speed of 20 km per hour, and the next one-third distance at a speed of 30 km per hour. We need to find the average speed of the bus. So let us first understand the basic concept, that means the key concept of this question. So the key concept is about the average speed. So average speed of any object is nothing, it is just equals to, so the average speed is equals to the total distance traveled by that object divided by the total time taken by that object to travel that distance. तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम चेक करें, सबसे पहले अगर फर्स्ट वाले हाफ की बात करी जाए तो लेट्स टेक टोटल डिस्टेंस भी 1 kilometer. Since we have given that the distances in kilometer per hour, that is speed in kilometer per hour, तो हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं. तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वन थर्ड के लिए बात करूँ, तो अगर फर्स्ट वन थर्ड के लिए अगर यहाँ पे बात करी जाए, तो वी कैन फाइंड द टाइम फॉर द फर्स्ट वन थर्ड, लेट्स से t1, and that is nothing, it is just equals to distance, that is 1/3 divided by the speed, which is 10. So this is the value of t1. Similarly, we can find the value of t2, which is for the second half. तो सेकेंड वन थर्ड के लिए हम यहाँ पे निकालें तो t2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो डिस्टेंस अगेन वन थर्ड है, एंड डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास है इस बार 20 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर द थर्ड वन थर्ड डिस्टेंस, and for third one third, let's say the time is t3, which is equals to distance is basically 1/3 of the total is divided by the speed is 30 kilometer per hour. So therefore we can find the value of the average speed. So therefore average speed is nothing, average speed is total distance upon total time. So total distance यहाँ पे हो जाएगी 1 किलोमीटर, सिंस हमारे पास हमने लेटर सपोज करिए 1 किलोमीटर, डिवाइड बाय टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3. तो t1 की वैल्यू है हमारे पास 1/30 प्लस t2 की वैल्यू है हमारे पास 1/60 प्लस t3 की वैल्यू है हमारे पास 1/90. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलसीएम एंड वी विल सॉल्व दिस पार्ट. सो यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज स्पीड है विच इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल्स टू, नाउ टेकिंग एलसीएम, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसको सॉल्व करके, दैट विल बी अवर 11/180. तो 180 is the LCM of 30, 60 and 90, and that will be 11/180. तो यहाँ पे we can say that average speed जो हमारे पास यहाँ से फाइनली आ जाएगी, that is equals to 180 divided by 11, and the unit will be kilometer per hour. But we need to find the answer in meter per second, so that's why यहाँ से average speed जो फाइनली हमारे पास निकल के आएगी, that is equals to 180 divided by 11 multiplied by 5/80, and which is nothing, it is just equals to 50 divided by 11 meter per second. So the correct answer for this question is 50 divided by 11. So we can just check the options. So in the options we can see that option number B is the 50 divided by 11. So the correct answer for this question is option number B. So I hope you understood it well. Thank you.